Hello everyone. So today we are going to discuss about the temperature distribution on Earth and the heat budget of the Earth. Moving on. Heat budget of the Earth. What does the word heat budget means? It means that the incoming heat on the Earth's surface should be equivalent to the outgoing heat from the Earth so that the budget would be balanced. So looking here in the figure, we can see that there is 100% of the radiation which is coming from the sun. So how it would come on the earth's surface? First of all, we would discuss the first half of the figure in which we are going to see how the incoming radiation which would reach on the earth. Firstly, some percentage of the incoming solar radiation would be reflected by the earth's surface. टोटल हमारे पास 100% रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ रही है जिसमें से कुछ परसेंट जो रेडिएशन होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अर्थ के सरफेस से सो दैट रिफ्लेक्टेड इज 6%. 6% would be reflected from the earth's surface. Then next is जब रेडिएशन अर्थ पर आ रही है उसकी पाथ में क्लाउड्स मिलते हैं एंड क्लाउड्स क्या करेंगे उसको रिफ्लेक्ट करा देंगे जो रेडिएशंस आ रहे होंगे वो रेडिएशंस क्लाउड से ही रिफ्लेक्ट होके चले जाएंगे तो द पोर्शन ऑफ रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं क्लाउड से दैट इज 17%. एंड देन नेक्स्ट इज कि कुछ रेडिएशंस जो आ रहे होते हैं वो स्पेस में स्कैटर हो जाते हैं दैट इज अराउंड 7%. सो ओवरऑल वी कैन सी दैट 30% जो रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचेंगी उसको इधर सरफेस रिफ्लेक्ट कर देगा या फिर क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या फिर स्कैटर हो जाएंगे टू द स्पेस. 30% would be reflected or would be outgoing from the earth. It's like that this 30% has outgone from the earth. These are like outgoing radiation from the earth. So now we are going to discuss about the rest of the 70%. So in those 70%, we have 23% which is absorbed by either ozone or the water vapor or clouds or the dust particles or the particulate matter present in the atmosphere. And the rest of the 47% would reach to the earth's surface and will be absorbed by the ocean and the land. So 30% वापस रेडिएट हो गई है कुछ पार्ट जो 23% था वो ओजोन वाटर वेपर एंड क्लाउड्स में ने एब्जॉर्ब कर लिया है एंड द रेस्ट जो 47% था उसको लैंड ने एब्जॉर्ब किया है. सो दिस इज हाउ द इनकमिंग रेडिएशन 100% किस तरह से वो डिवाइड होती है और अर्थ सरफेस पे रीच करती है. नाउ द थिंग इज कि अभी ये 100% को हमें आउटगोइंग भी कराना है ताकि बैलेंस रहेगा बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग. सो 30% जो इनकमिंग था वो आउटगोइंग भी हो चुका है तो वी नीड टू सी कि 70% को कैसे आउटगोइंग में चेंज किया जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोलर रेडिएशंस आती हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है बट व्हेन दे विल स्ट्राइक द अर्थ अभी जो रेडिएशन वापस जाएंगे दे आर लॉन्ग वेव रेडिएशंस. So around 10% of the radiations which are absorbed by the earth would be radiated back in the form of long wave. Next is latent heat. Latent heat is that heat which is released when state of the matter is changed. Let's say the state is changing from gas to liquid. Then some latent heat would be released. In that way also the heat would be radiated to the atmosphere. And the next one is conduction. Conduction means the direct transfer from the land to the atmosphere. It is around 7% जो directly transfer हो जाती है land से atmosphere में. So conduction से या फिर latent heat की form में या फिर long wave radiations जाती हैं इनको भी further absorb
लिया जाएगा। ऊपर जो हमारे पास ओजोन है या फिर क्लाउड्स हैं, उनके पास भी ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड काफी सारी हीट होती है, तो वो भी उस हीट को अब रेडिएट करेंगे, बिकॉज जब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ रही थी तब काफी सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया था वाटर वेपर ने, ओजोन ने, क्लाउड्स ने। अब वो रेडिएशंस भी अ, वो जो हीट रेडिएशंस यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई थी, अब उनको भी वापस रेडिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर रेडिएट कर दिया जाएगा बाय द क्लाउड्स। सो क्लाउड्स अराउंड 20% रेडिएट कर देते हैं, 40% are radiated by the water vapor, ozone and carbon dioxide, which is a greenhouse gas. So this way the 70% is radiated back into the atmosphere. So this is how a balance would be created between the incoming and outgoing. 30% is radiated back at the same time. The rest 70% is radiated in this way, and that's how a balance would be created on the earth. And heat budget this way is balanced on earth. Now looking into the factors that affect the temperature on earth. So the first one is latitude. So latitude affects the temperature on the earth. As we know that equator receives the direct sun rays, so the temperature on the equator should be higher. And the poles receive the slanting sun rays. That's where the temperature on the sun on the poles should be less. But as the equatorial regions receives everyday 4 p.m. rainfall, that's why temperature of the equatorial regions is lesser than the temperature of the tropical regions. सो डेली 4 p.m. रेनफॉल की वजह से जो टेम्परेचर होता है इक्वेटोरियल रीजन में वो कम हो जाता है ट्रॉपिकल रीजन के कंपैरिजन में, इसलिए टेम्परेचर इक्वेटर से पोल्स तक डायरेक्टली डिक्रीज नहीं हो रहा होता है। इक्वेटर से ट्रॉपिकल रीजन्स तक जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, एंड फर्दर ट्रॉपिकल रीजन से पोल्स तक डिक्रीज हो जाता है। तो पोल्स का टेम्परेचर सबसे कम होता है, एंड जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, वहां पर ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जिसकी वजह से टेम्परेचर इम्पैक्ट होता है अर्थ सरफेस पे, दैट इज एल्टीट्यूड। तो जब हम ज़्यादा हाइट पर जाते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा हाइट पर जाते हैं जब, तो प्रेशर कम हो जाता है, एंड ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऊपर जाते वक्त कम होता हुआ ऑब्जर्व किया जाता है। The next point is nature of the ground surface. Nature of the ground surface plays very important role as the color of the surface. Let's say that we have white color. So white color reflects more. It will reflect more heat and will have less temperature. But on the other hand, if it is dark color, so it would absorb more heat and hence would have high temperature. The next is if the slope of the surface is such that the sun it receives the direct sun rays, then its temperature would be more. And if the slope is such that it is receiving lesser sun rays, then its temperature would be less. Now the next is distance from the sea. If the distance of any land surface is very less from the sea, then by the process of land breeze and sea breeze, it would observe that the temperature would not be much higher in those regions. They would be observing a temperature which is nominal, like the temperature would not touch the extremes. It would be in the range of 27 to 35 degrees Celsius. And the next factor is presence of cold and warm ocean currents. Ocean currents, if it is warm, then the temperature would be higher in the regions. If it is colder, then lead to some colder regions. The next one is wind movements. Wind movements also plays important role as winds transfers heat from one latitude to another latitude.
It has very important role in the atmospheric circulations also. So if the winds are coming onshore, then they would have influence on the regions where they are onshore. So winds are coming onshore, then it is well, those regions would not be observing very extreme temperatures. As Mumbai, we have the example. It is on the coastline regions, and onshore wind are coming there. It is very hard for Mumbai to have extreme temperature. They would definitely be having some nominal temperatures. The next one is albedo. Albedo also important factor here, as albedo will be deciding that how much heat would be reflected by the surface. So let's say we have land and oceans. So albedo of land is greater than the albedo of the oceans. Uh, it is depend like if there is some ice, so ice would reflect more light. This way, the surfaces would be reflecting the heat. I hope you understand the topic well. Thank you for watching.